the channel Fun with Maths. With reference to the first lecture, Relation and Function, we are going to take today graphs of trigonometric functions and its inverse. So before that, it is very important to recall that when we can define inverse trigonometric function. So I have taken the first function here as y equal to sine x. So whenever we are talking about the function, there are two important things which we will have to know. First, that if f is a function from x to y, when we say that the function is 1, 1, there are two methods to check the function is 1, 1 or not. One is a very classical method, that x1, x2, two elements belongs to the domain of the function. Domain is this set. Left hand side set is domain. Means x1, x2 belongs to the domain if images are same. We have to show that the elements are also same. For example, I am taking a function from f from set of natural numbers to set of natural numbers, and function is defined like this: fx is equal to 2x, right? Now this function is 1, 1. Why? F of x1 is equal to f of x2. If images are same, we will prove that the elements are also same. By definition, this is 2x1 and this will be 2x2. 2 to cancel implies x1 is equal to x2. So we are starting with this. Images are same and proving that elements are also same. Now, I have taken today the first function is y equal to sine x. Now this function is not 1, 1. Graphically, how we can check? I am recalling that if the let us change the definition of the function. F is r to r and define like fx is equal to 2x. Now draw a simple graph of this. Very simple graph. You know how to draw this graph. X-axis, y-axis, and x equal to 0, y is 0, y is 0. You take few points. X is equal to 1, y is equal to 2 we will get. So here we will get a point 1, y 2, and similarly you take a point x is equal to minus 1, y is equal to minus 2. So we will get a point here. This is 1, this is minus 1, and join this. Now see, this function is 1, 1. Why? Graphically, how we can check? We draw a line parallel to x-axis. If it intersects the graph exactly in one point, which is this point, right? By chance I am taking this intersecting this. You can draw above that also. See, intersecting at only one point. You can draw a line below the origin. See, again this is intersecting at one point. This means this is a 1, 1 function, right? And if this is not 1, 1, if we are not taking function as 1, 1 function, then we cannot define an inverse function. Now, what will be the inverse function? Here, f inverse is from now y to x, right? Now domain is y now, and codomain is x. So if it is not 1, 1, so the scene will be like this.
many elements are related to one point. Now see, we cannot define. If the situation is like this, we cannot define inverse function. Why? In that case, this will be a relation. This y is related to x1, x2, x3. This is a function from x to y, but this is not a function from y to x. So that's why to define inverse trigonometric function, we have to restrict the domain of the trigonometric function. Why? Now, if we restrict the domain of sine x, y equal to sine x from minus pi by 2 from here to here, from pi by 2 here. Now see, this function is 1, 1. Why? I am drawing a dotted line here. See this. This branch is 1, 1. Why? You can draw a line parallel to y-axis. Let me draw parallel to x-axis. Now, see this branch. Look at this branch. It is intersecting at only in one point. So that's why it is necessary to restrict the domain of the trigonometric function. Now, what will be the, you can ask me, there are more than these branches. Yes. Here to here, pi by 2 to 3 pi by 2, intersecting at only one point. So this is the another branch. 3 pi by 2 to 5 pi by 2, it is intersecting only in one point, at one point. So this is another branch. Here to here, minus pi by 2 to 3 by 2, intersecting only in one point. Again, this is another branch. Minus 3 pi by 2 to minus 5 pi by 2, intersecting only one point. Yes, this is another branch. So we have many branches where the function is 1, 1 now. That's why this is very, very necessary that we restrict the domain of the trigonometric function. Then and only then we can define inverse trigonometric functions. Otherwise, we cannot define. But example I am giving you. This is the graph of the inverse trigonometric function I am giving you. See, sine 0 is 0. Now, if you remember the unit circle, this is very important thing. Learn the unit circle. This point is 1, 0. This is 0, 1. X dash x. This point is minus 1, 0. And this point is 0, minus 1. Right? So, sine 0 is 0. Look at the y coordinate, right? You will get what is sine. Now, sine pi by 2 is 1. What is the sine pi? Again 0, this point, right? What will be the sine 3 pi by 2? Minus 1, right? Now, sine minus pi by 2 is minus 1. Now, we want sine of 120 degree. One example. This is sine 180 minus 60. That is a sine pi minus pi by 3, which is known as sine 2 pi by 3. And sine 180 minus theta is sine theta. From this I am taking. So this is sine pi by 3 value. And sine pi by 3 is what? कितना होता है? Root 3 by 2. Right? But sine pi by 3 is also root 3 by 2. Equal to sine 2 pi by 3. Now see, this is second quadrant value. Again, you will come to the first quadrant. Sine of 360 plus 60 means 2 pi plus
pi by 3. This will be sine 7 pi by 3. Again you will get the value root 3 by 2. So the function is not 1, 1. And if you are getting if you are getting infinitely many values where it is giving you root 3 by 2. I am coming back to the sine function. See, check. If this is pi by 2, this is also 1. That is 5 pi by 2. Right? Pi by 2. Again, minus here also. So there are so many places you are getting the same value, infinite. This is known as the general value of theta. That is not in the class 11th syllabus now. The general value of theta we used to like. We used to call it like that. So back to the sine function. Now see that. Look at this function. I am shifting this here. So we have restricted this function from here to here, right? And we have seen that this part is 1, 1, and so we can define the inverse trigonometric function. So what will be the domain? The domain for the inverse function, domain will be the codomain of the sine function, right? So let's come to this now. The graph will be like this. Now our domain of the inverse trigonometric function, if we are going to do this thing, sine inverse will be from y to x. Now this will not the whole set y and x. Sine inverse function, what will be the domain? Closed minus 1 to 1. And what will be x? X will be, here will be minus pi by 2 to pi by 2. Let's clean this. This is all set, you know that why we are going to get the values like this. Sine pi by 3 is equal to sine 2 pi by 3 is equal to sine 2 pi plus pi by 3, sine 7 pi by 3, all are equal. So we cannot say that this is a 1, 1 function. This is not a 1, 1 function. See, this is not a 1, 1 function. Now for 1, 1 function, we have to restrict the domain of the sine function, that we have restricted that. And then now see, I am showing you sine of pi by 2 is 1. So sine inverse 1 is equal to pi by 2. Sine of minus pi by 2 is equal to minus 1. So sine inverse minus 1 is equal to minus pi by 2. That is why we are getting this. So restriction is necessary here. Now next graph is cos of x. Now see why we are going to restrict the domain of cos function from 0 to pi. 0 to pi here. Why? All of set values. I recall cos of 0 is 1. Cos of pi by 6 is 1 by 2. Root 3 by 2. Cos of 45 pi by 4 is 1 by root 2. Cos of pi by 3, that is 60, is 1 by 2.
and cos of pi by 2 is equal to 0. Cos of, this is necessary to know the values. Cos of say 90 plus 45 would be 135, right? So pi by 2 plus pi by 4, the value will be cos of 180 minus theta is minus cos theta. This means this will be equal to minus 1. That is minus 1 by root 2. Cos of 120, that is 90 plus 30. So this will be 120 means pi minus pi by 3. So this will be minus, second quadrant value, cos will be always negative, cos of this, and that is minus 1 by 2, right? Cos of, this is 60. Cos of 150, that is pi minus pi by 3 will be, I'm sorry, this value will be what? This is 180 minus 60, 120. So cos 60 की value लेगा minus 1 by 2, right? Cos of 150 क्या होगा? 90 plus 60, है ना? तो that is 180 minus 120 का हो गया, 150 क्या होगा? Minus pi by 6 is minus cos of pi by 6, that is minus root 3 by 2. Now see, this means from 0 to pi we are getting all the negative and positive value. So we restrict the domain of cos inverse is from, domain will be, we will get all the values. So see, this is mind closed minus 1 and plus 1, close minus 1 to plus 1, yes, close minus 1 to plus 1, but its codomain in this case will be from 0 to close 0 to pi. This you will have to take very seriously. Again, the function is not, cos function is not 1, 1. This is not 1, 1. We draw a line parallel to x-axis. Now see that infinitely many points you will get the same y. This y is equal, this y is equal. In here also y is equal. Similarly in this side also there are so many y's, right? Above the origin y is positive. So this y, if you take, for example, if we are going to take this point as x1, this is x2, this is x3, this is x4, and this point is x5, this point is x6 if we are going to take in x-axis, right? So what we are getting, f of x1 is equal to f of x2 is equal to f of x3 is equals to f of x4, f of x5 is equal to f of x6, and so on. And so on, infinite points you are getting. So if infinite point has the same image, the function is not 1, 1. This is many to 1. And that's why the inverse is not, we are not able to define. So inverse, f inverse does not exist here. F inverse does not exist. And that's why we define a, I'm sorry, that's why we restrict the domain of the cos function, and then only we can define the inverse function. So this is very necessary that you should have a picture. If you close your eyes, the sine functions graph you know, cos functions graph you know, tan functions graph you know, cosec, sec, cot, all these functions graph you know. Seeing the graph you can understand the functions are not 1, 1. So to make first thing that we are going to do, that the functions we
are going to restrict the domain and making it a 1-1 function. And then you can get infinitely many branches where the function is 1-1. And then you can define in different branches, the domain will change. You can get a 1-1 function, right? So I am coming back to cos inverse. Now see, what is the domain now? X-axis is the domain, right? X dash, this axis. But where the values are -1, because you can get minimum -1 and maximum +1. And now see that this is your principal value branch, 0 to pi. Here, the dark in the graph also. And these are the other branches where the function is 1-1. So first branch will be from 0 to pi. Then pi to 2 pi, right? Here 0 to minus pi. Then minus pi to minus 2 pi. Minus 2 pi to minus 3 pi. You will get all like this. So in this case, for cos inverse, your domain is minus closed. Points are included. This is a very interesting. Now you in cosec and sec you will get different type of max, and 0 to pi. And this is the known as the principal value branch. Other branches, you can have the questions like this. The graph is given, write from here, mention the value of cos inverse -1/2. What is the value for that? Or here they will mention this is one branch and write down the value of cos inverse -1 or -3 pi/2's value. So other branches will be pi to 2 pi, 2 pi to 3 pi, and 3 pi to 4 pi, and so on. Right? With pi के लेंथ में आपको different branches मिलेंगे. And please, if you have any queries, please put it into the comments so I can reply. Now, next graph is cosec. Right? Now, sine inverse 0 degrees value is 0. Right? And sine pi/2 is equal to 1. And cosec x is equal to 1 upon sine x. This implies cosec 0 is equal to infinity, not defined. But cosec pi/2 is 1. Right? Now this function is not again 1-1. Right? Draw a line parallel to x-axis. This is very obvious. Now, because cosec pi is infinite value, so there is a boundary drawn here, right? So the graph actually from minus pi/2 to pi/2, you get open minus pi/2 and open pi/2. cosec का ग्राफ ऐसा नहीं होता है. कोसेक का डोमेन भी रेस्ट्रिक्ट करना पड़ता है. एक बार हम रेस्ट्रिक्ट कर चुके हैं साइन के लिए, राइट? -pi/2 to +pi/2, और उसी बीच में हमको रहना है, राइट? सो सी two things which is very important from this graph. I am elaborating, enlarging this, right? Now see here, इसके बीच में कोई वैल्यू ही नहीं है. 1 है, 1 इज देयर, क्योंकि कोसेक pi/2 इज 1. लेकिन 1 को छोड़े, ओपन 1 एंड ओपन -1, देयर इज नो y हियर. देखिए मैंने लाल से इसको हाईलाइट कर दिया. तो इसका मतलब इतनी वैल्यूज तो हैं ही नहीं इसमें, राइट? तो इसका डोमेन फिर हमारा चेंज होगा. इसमें डोमेन में हम देखेंगे कि हम क्या ले सकते हैं.
और क्या नहीं ले सकते हैं, राइट? ये वैल्यूज तो हम ले ही नहीं सकते हैं। क्लोज्ड -1 नहीं ले सकते हैं, क्लोज +1 नहीं ले सकते हैं, कि ले सकते हैं क्योंकि इसके अबव ही वैल्यू है हमारा। तो डोमेन कोसेक इन्वर्स के लिए हमको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा कि हाँ क्या हम लेंगे इसका डोमेन, क्या लेंगे कोसेक इन्वर्स के लिए। डोमेन होगा या तो x > 1 होगा, देखिए 1 से ज़्यादा है y, राइट, या x विल बी लेस दैन इक्वल टू -1। -1 ले रहा है लेकिन उससे सारे कम वैल्यूज, इधर के वैल्यूज जो x के होंगे वो -1 से कम ही वैल्यूज होंगे, वो -2 -3 जो भी होगा, राइट, x की वैल्यूज। सो ग्राफ एकदम दिमाग में रखिए। देखिए ये इसका ग्राफ ऐसा नहीं होता है कि ये कब बने, वो दूसरे ब्रांचेस के लिए आ रहे हैं। पहले ब्रांच में तो इतना ही है 0 to π/2 में, और दूसरे ब्रांच में जो तुम्हारा आपका है वो ये वैल्यूज है, ये 0 to -π/2 के लिए। तो यहाँ से यहाँ तक में जो -π/2 और +π/2 में रेस्ट्रिक्टेड ऑफ डोमेन हो गया है, उसके बीच में सिर्फ इतना ही ग्राफ आता है हमारा। हम फिर डार्क कर दे रहे हैं इसको, ये और ये, दैट्स ऑल। 1 समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों 1 होना चाहिए, और तब क्योंकि वो रिलेशन हो जाएगा, फंक्शन रहेगा ही नहीं इन्वर्स डिफाइन करने के लिए। आप यहाँ पे ड्रॉ करिए, देखिए इन सब जगह पे ये 1 है, क्योंकि एक नहीं है, देखिए एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे ये कट कर रहे हैं, तो कैसे 1 है? मतलब एक ही थीटा के लिए नहीं, इनफाइनाइटली मेनी थीटा वी आर गेटिंग द सेम वैल्यू, दैट्स व्हाई इट इज नॉट 1. So restriction of the domain, restriction of the domain of the trigonometric function, trigonometric function बहुत important, trigonometric function is important. This is the, यही पे 1 का काम है, राइट? सो नाउ कम बैक टू द इन्वर्स। हमने देखिए एक जगह पर रखा है इसको कि आपको एलाबोरेट कर दें। देखिए ये देखिए डार्क जहाँ पर है ये इसका है एक π/2 तक। 0 पे क्या होगा, कोसेक 0 इन्फिनिटी होगा। तो देखिए इन्फिनिटी, ये लगेगा कि आपको एक्स एक्सिस छू लेगा लेकिन छूता नहीं है, इनफाइनाइट बहुत बड़ा वाई इसका एक्स जाएगा। और यहाँ पर भी देखिए डार्क है, तो जितना जितना ये कम होगा एक्स, उतना ये वाई इसका ये बढ़ता गया होगा। तो यही है, लगेगा कि आगे जाके छुएगा लेकिन छूता नहीं है। ये टेंजेंट एंड इन्फिनिटी कहते ही हैं इसको, जब ग्राफ ऑफ द फंक्शंस करेंगे तब करेंगे। सो दिस इज़ क्लियर. So this is what will be the domain and what will be the range will remain same. देखिए साइन इनवर्स का याद रखिएगा, इसका डोमेन होता है -1 से 1, राइट, और इसका कोडोमेन होता है -π/2 to π/2। अब इसके साथ कोसेक इनवर्स को लिख लीजिए। देखिए ये अब देखिए यहाँ पर अगर ये वैल्यू -1 है और ये +1 है, तो आप देखिए कि कहाँ से कहाँ तक वैल्यू जा रहा है। उधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, इसका मतलब ये क्लोज तो आएगा ही नहीं। हमने जो लिखा था एकदम सही लिखा है यहाँ पे, ये देखिए x या तो 1 या तो 1 से बड़ा, और या तो -1 या तो -1 से छोटा, ये वाला वैल्यूज़ होगा। मतलब यहाँ से लेकर के उधर जा सकते हैं आप x के तरफ, और इधर से इधर आ सकते हैं उधर। ये बीच वाला देखिए गैप जा रहा है, ये जो पार्ट है इसका गैप जाता है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आता है, राइट। सो ये आप देख लीजिएगा, >1 होगा, < -1 होगा, लेकिन इसका ये सेम रहता है, क्लोज -π/2, क्योंकि वो वैल्यूज़ डिफाइंड है हमारे, राइट। अब देखिए, अब आइए सेक में।
हम लोग कॉस कर चुके हैं, अब सेक में देखिए, हम इसको उठाएं और इसको ज़रा सा यहाँ ले आएं और इसको बड़ा कर दें, राइट। अब देखिए, हम आपको याद दिला रहे हैं कि कॉस ऑफ 0 क्या होता है, 1, और कॉस ऑफ π/2 क्या होता है, 0। तो इसका मतलब सेक π/2 हमारा आएगा इन्फिनिटी, और सेक 0 डिग्री क्या आएगा, 1 ही वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब अब नॉर्मल देखिए, हमने बार बार आपको एक चीज़ इम्फेसिस कर रहे हैं, उसका ध्यान रखिएगा। 1 चेक करने का ग्राफिकल मेथड इज ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम एनीवेयर, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस above the origin or below the origin, that doesn't matter, right? Now you can check that function is not 1. There are so many y's you are getting, same y you are getting for many values, right? So the function is not, this means that to define inverse function we have to restrict the domain of this function. So what will be the domain of the sec function? We have to define 0 हो सकता है क्योंकि 1 है, लेकिन इन्फिनिटी नहीं हो सकता है। और कॉस का हमारा डोमेन हमने किस में रेस्ट्रिक्ट किया था, 0 to π पे, राइट। तो सेक का हम कहाँ रेस्ट्रिक्शन करेंगे, ये देखना है कि सेक फंक्शन के लिए हमारा क्या वो होगा, रेस्ट्रिक्शन होगा। इसका होगा सेक और कोसेक का सेम होगा हमारा, सेक और कोसेक का सेम नहीं होगा, सेक और कॉस का हमारा सेम होगा, राइट। तो कॉस का डोमेन हमने कहा यह किया, तो सेक का भी रेंज हो जाएगा ये, राइट। और डोमेन क्या होगा, एक्स सेक इनवर्स के लिए हमारा डोमेन होना होगा एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्योंकि 1 वैल्यू ले रहा है ये। देयर आर सो मेनी places where it will take 1 value, right? 1 कर सकते हैं आप, और x is less than equal to -1। तो अब इसका कोडोमेन क्या होगा, हमको यही देखना है। इसके लिए ये तो आ गया कि x is greater than equal to 1 और x is less than equal to -1, लेकिन इसका रेंज क्या बनाएगा, हमारा रेंज बनाएगा y, और y क्या होगा, y इज बिटवीन, देखिए 0 to π हम ले सकेंगे, तो लिखिए क्लोज 0 to π लिख सकते हैं कोडोमेन, लेकिन इसमें माइनस करना पड़ेगा π/2, क्योंकि π/2 पे ये इन्फिनिटी होता है, और इन्फिनिटी इज़ अ वेरी बिग नंबर। सो वी कैन, हम आप 1000 भी ले सकते हैं, 2 लाख भी ले सकते हैं, कितना लेंगे तो वो तो फिक्स नहीं है, तो उस पॉइंट को निकाल दिया। तो आपको हमेशा इसका देखिए, π/2 पे एक लाइन खिंचा हुआ है, 3π/2 पे है, -π/2 पे है, क्योंकि ये वैल्यूज़ बहुत बड़े वैल्यूज़ होते हैं, तो हम उसको पॉइंट को निकाल दिया। दूसरा ब्रांच लेंगे जब अगर आप π to 2π लेंगे, तो उसके बीच में 3π/2 आएगा, जहाँ पर ये डिफाइंड नहीं है, राइट। तो उस ब्रांच से 3π/2 को निकाल देंगे। अगर आप 4π to 5π लेंगे तो उसके 5π/2 आएगा, उसमें उस पॉइंट को निकाल देंगे हम। गॉट इट ना, कि इस तरह से हम यहाँ पर उसको बनाएंगे 1 इन ब्रांचेस पे, जहाँ पे डार्क लाइन होगा। देखिए इस पे, देखिए इसको बड़ा करके देखिए, ये देखिए जहाँ पे ये डार्क लाइन है, ये तो हमारा फर्स्ट ब्रांच विल बी द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगा, ये हमारा अदर ब्रांचेस में आएंगे, और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में जो डार्क जगह है वो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। तो डोमेन रिस्ट्रिक्शन के बिना हमारा होगा ही नहीं ये काम। Until and unless we restrict our domain. Done? Similarly, अब हम आते हैं tan x पे।
अब टैन इस हमने देखिए टैन हटा दिया, अब टैन हम हाथ से ड्रॉ करने जा रहे हैं। टैन के वैल्यूज़ हम रिकॉल कर रहे हैं। टैन 0 डिग्री साइन की तरह चलता है, 0 होगा। और टैन, क्योंकि टैन एक्स आप क्या लिखते हैं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। और तो फिर टैन एक्स लिखते समय हमको ज़रा ध्यान रखना पड़ेगा, टैन π/2 होगा साइन π/2 अपॉन कॉस π/2, और ये इन्फिनिटी हो जाएगा क्योंकि कॉस π/2 0 होता है, नॉट डिफाइंड होता है। तो अब देखिए टैन का फंक्शन कैसे ड्रॉ करेंगे, बहुत समझ के, हम लोग बिल्कुल भी जल्दीबाजी में नहीं हैं। अगर ये हमारा π/2 पॉइंट है एक्स एक्सिस में, ठीक है, तो π/2 से छोटा थोड़ा 1 होगा हमारा, तो खैर 1 तो tan 45 पे आएगा। तो हम π/2 पे एक डॉटेड लाइन कर लेंगे क्योंकि ये इनफाइनाइट वैल्यू लेता है, और लेकिन tan 0 0 होता है, तो हम 0 0 ले लिया और इसको ऐसे बना लिया। अब देखिए ये भी ऐसे ही होता, और ठीक इसी तरह से π/2 पे हम एक लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं कि वो वैल्यू ये नहीं लेगा, तो ये ऐसे आ गया। डन। tan 0 डिफाइंड है, π/2 नहीं डिफाइंड है, -π/2 नहीं डिफाइंड है। तो इसका इन्वर्स के लिए अब आप देखिए, ये tan इन्वर्स x का है, और इसका देखिए ये डार्क पार्ट है, इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 ये लेता है, इन्फिनिटी भी लेता है। तो इसका मतलब इसका साइन इन्वर्स का क्या था डोमेन हमारा, -1 से 1, और इसका था कोडोमेन -π/2 टू π/2। ठीक, इसका मतलब अब तो ये टैन का तो पता चल गया कि इसका डोमेन क्या होगा, क्लोज π/2 -π/2 नहीं होगा, ओपन -π/2 और π/2 होगा। आप अगर गड़बड़ाएंगे तो चेक भी कर लेंगे अपने किसी किताब से कि क्या होगा। इन्वर्स के लिए y बिटवीन π/2 टू -π/2 ये होगा, ठीक। और इसका ये क्या होगा, -∞ टू +∞। देखिए एक बार और बता रहे हैं, जब कभी भी किसी भी फंक्शन का डोमेन चेक करना होता है तो ये सोचिएगा कि मैं यहाँ खड़ी हूँ और मेरे हाथ जहाँ तक जाते हैं वहाँ तक हमारा डोमेन होता है। तो ये x वैल्यू हमेशा आपको डोमेन दिखाएगा। तो आप देख लीजिए x tan x के लिए रेस्ट्रिक्टेड है, कहाँ से, -π/2 से π/2 के बीच में, इसीलिए यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लग गया है इसका, क्योंकि ये वाला इसका कोडोमेन tan x वाले फंक्शन का डोमेन है, तो डोमेन रेस्ट्रिक्टेड हो गया। और 1 1 भी है, आप कर लीजिए, कहाँ से भी पॉइंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस के लिए एक ही पे कट करेगा, एक पे कट करेगा, एक पे कट करेगा, हमेशा एक पे कट करेगा, एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट ही नहीं कर रहा है। दूसरा, जब आप इसका करेंगे ड्रॉ, अगर इस तरह का ग्राफ बनेगा तब ये मेनी 1 1 2 बनेगा, और तब इसीलिए रेस्ट्रिक्ट कर दिया मैंने, इसीलिए आपके लिए सिर्फ और सिर्फ -π/2 से π/2 का ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ किया, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि इसी पार्ट में ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ये 1 1 है। ठीक, अब आप देख लीजिए यहाँ के लिए जब आप आएंगे, देखिए ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, डिफाइंड है, उसका ब्रांच हो गया -π/2 से इतना हो गया हमारा, डिफाइंड फंक्शन है। x क्या होगा, अब आप देखिए x इधर वाला होता है ना, यही वाला तो x एक्सिस है, कोई भी वैल्यू ले सकता है, सबके लिए डिफाइंड है ये। देखिए x एक्सिस में हर वैल्यू, इसीलिए -∞ टू +∞। लेकिन क्या वैल्यू नहीं ले पा रही है, 0 ले रही है, लेकिन 1 भी ले रही है यहाँ पर, लेकिन π/2 पर क्या आ जाता है, यहाँ पे जैसे ही π/2 आया इनफाइनाइट, इसीलिए इसको छुआया ही नहीं गया है। बहुत बड़ी वैल्यू है, मतलब आप कितना भी सोच सकते हैं, इसका रेंज आ रहा है, ठीक है। ये हमारे अदर ब्रांचेस हो गए, कहाँ से,
π/2 से 3π/2, फिर 3π/2 to 5π/2, ये अदर ब्रांचेस में आ गए। डन। सो वी हैव डन। कॉट भी देख लेते हैं जल्दी से, तो फिर यहाँ पे स्टॉप करेंगे आज। देखिए कॉट के लिए भी सेम थिंग, आप कॉट और टैन का देखेंगे तो टैन अगर 0 0 है तो कॉट ऑफ 0 हमारा इन्फिनिटी आ जाएगा। तो देखिए कॉट 0 पे क्या है, इन्फिनिटी है। देखिए इसको हम थोड़ा एनलार्ज करते हैं, यहाँ ले आते हैं टैन वाले फंक्शन को। ठीक, देखिए कॉट 0 देख रहे हैं, इन्फिनिटी यहाँ पे नहीं, वाई एक्सिस को कट करता है ये। π/2 पे क्या होगा, टैन π/2 क्या है, अगर टैन π/2 इन्फिनिटी है तो कॉट π/2 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 1/0 था, ये 0/1 है, तो ये 0 हो गया। देखिए 0 है π/2 पर, 0 पे और पाई पे, तो कॉट और कॉस का एक जैसा चलेगा। ठीक है, कॉस के लिए आपने क्या किया था, कॉस इन्वर्स के लिए रेस्ट्रिक्शन था 0 to पाई, मतलब इसका कोडोमेन हमारा 0 to पाई था रेंज, और यहाँ पर क्या था -1 to 1, ये साइन वाले फंक्शन की तरह था। तो कॉट के लिए क्या होगा वो भी देख लीजिए। कॉट इन्वर्स का डोमेन अब क्या हो जाएगा, जरा बताएंगे कोई हमको, -∞ to +∞। अभी हम उसको एनलार्ज करके दिखा रहे हैं आपको ग्राफ। और इधर वाला क्या बन जाएगा हमारा, ये वाला बिल्कुल कॉस की तरह चलेगा, लेकिन ओपन 0 to पाई, क्योंकि 0 पे ये देखिए इनफाइनाइट जा रहा है और पाई पे भी इनफाइनाइट आ रहा है। तो 0 ओरिजिन के नीचे -∞ और ओरिजिन के ऊपर +∞, तो ये वाला उसका डोमेन हो गया। डन। अब थोड़ी 1 मिनट में इसका बस एनलार्ज करके दिखा दें, इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कैसे काम कर रहा है, देख लीजिए। देखिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ये वाला, ये देखिए -∞ to +∞। ठीक, और उसका वो क्या हो गया हमारा, वैल्यूज़ क्या हो गया, ये देखिए यहीं पे देख, क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू ले रहा है ये। ठीक है, तो इसके डोमेन में ये है और इसके कोडोमेन में ये, इसका मतलब ये वाला हमने रेस्ट्रिक्शन से ही सब कुछ होता है। तो 0 नहीं मिलेगा, कॉट 0 तो इन्फिनिटी होता है, तो वो वैल्यू तो नहीं मिलेगी, लेकिन उसको छोड़ के जो भी वैल्यू आप निकालेंगे सारे वैल्यूज निकल जाएंगे। सो दिस इज़ द मेन कॉज वाई वी आर टेकिंग दिस एज अ this thing, restricting our functions domain, because to make it a 1 function, that's why. So we stop here today. Tomorrow we are going to take the questions from only the principal branches you have to write down, and very few simple questions are from your syllabus that we are going to give tomorrow, solutions of the questions.